मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Merhaba arkadaşlar. Assalamu alaikum मेरे हमवतन दोस्तों. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. Ben çok iyiyim ve aynı zamanda da çok mutluyum. और आजकल आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे. मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुş hum. Bugünkü videonuzu başlamadan önce eğer şimdiye kadar siz benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin aşağıdaki abone butonuna basın ve yanındaki zili de basın ki benim videolar size ulaşır ve çok hızlı yönden ulaşmaya devam eder. İnşallah olsa gereker. Şimdi benim videoları ailenizle de arkadaşlarınızla paylaşarak benim çok lezzetli yemeklerin tariflerini yiyin ve benim videoları beğenin. और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंचती रहें। और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें. Şimdi bugün biz pasta yapıyoruz. Sade pasta yapıyoruz. Kremalı pasta da gelecek inşallah ama bugün sade pasta yapacağız. Sade yani. Siz onu sade de yiyebilirsiniz. Onu krema sıçrayarak kremalı pasta yapabilirsiniz. Çok güzel dekorasyonla süsleyebilirsiniz. Ama biz bugün sade pasta yapacağız. Çünkü bugün sadece biz pasta yapacağız. Sonra kremalı pasta da gelecek inşallah. Ama bugün pastanın tarifini söyleyeceğim size. तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ जो केक का बेसिक स्पंज होता है उसकी रेसिपी लाई हूँ. तो आज हम केक के लिए बेसिक स्पंज बनाएंगे. तो मैं क्रीम भी डेकोरेशन की भी इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक बेसिक उसका जो स्पंज होता है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ. उसको आप सादा भी खा सकते हैं और वो बहुत टेस्टी होता है. और अगर चाहे तो क्रीम के साथ भी खा सकते हैं. क्रीम लगा के डेकोरेशन करके खा सकते हैं. तो ve şimdi bugünkü malzemeleri gidelim. Yani ne malzemeler gerek bizim pasta için. तो आज हम लोगों को क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी तरफ चलते हैं. यानी कि हमारे के लिए हमारे बेसिक स्पंज के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको बनाने के लिए उसको देखते हैं. ये हमारे केक के इंग्रेडिएंट्स हैं. सिर्फ सिंपल से 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं. ठीक है, इसमें हमारा केक का स्पंज तैयार हो जाएगा. Şimdi burada bizim malzemelerdir. 1 कप आपने मैदा ले लेना है. ये गिलास है, 1 गिलास ये मैदा है. Bir bardak un alacağız. 1 गिलास चीनी. Bir bardak şeker. और ये आधा गिलास ऑयल का ले लेना. Yarım bardak yağ. आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही मैदा और उससे आधा जो क्वांटिटी है वो ऑयल की लेनी है. Siz buraya bunu dikkat edeceksiniz ki ne kadar şeker aldıysanız o kadar un alacaksınız ve onun yarısı da yağ alacaksınız. 3 अंडे लेने हैं अपने. 3 yumurtalar aldık ve burada yumurta 3'tür, onun için 1 bardak aldık. Eğer 6 yumurta olursa 2 bardak şeker alacağız, 2 bardak un ve 1 bardak yağ alacağız. जी, 3 अंडे जो हैं उसके लिए ये क्वांटिटी है. अगर आपने अंडे डबल करने डबल केक बनाना है तो डबल क्वांटिटी हर चीज़ की कर लें. उसके अलावा ये बेकिंग पाउडर है. यहाँ पे ये इस तरह पैकेट में मिलता है. ये तकरीबन 10 ग्राम का पैकेट है. मैं 3 अंडों के लिए 1 पैकेट यूज़ करूँगी. Buraya hamur kabartma tozu aldık. Bunu da aynısı bu 10 gramın bir pakettir. Bir paket ekleyeceğiz ve bunu da aynı. Eğer yumurta olursa 1 paket, altıysa 2 paket. Yani her şeyi 2 kat yapacağız altı olduğunda. और ये है वनीला फ्लेवर है. ये वनीला फ्लेवर की चीनी है. तो आप चाहें तो 1 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस का भी डाल सकते हैं. Buraya biz şekerli vanilin aldık. Bunu da 1 paket aldık. Bu da 5 gramın bir paketidir. Bunu da 3 yumurta için 1 paket kullanıyoruz ve eğer siz istiyorsanız şekerli vanilin eklemeyin. Ekleyin 1 damla suyulu vanilin ekleyin. चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं. Şimdi biz yapıma geçiyoruz. जी तो व्यूअर्स, ये शुरू करने से पहले मैंने ओवन को प्री हीटिंग पे स्टार्ट कर दिया है
160 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको लगाया है। आधे घंटे के लिए उसको हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मैदा। Şimdi bizim mikroya önceden sıcaklatacağız. Onu 160 derecede sıcaklatacağız ve yapmadan önce başlayacağız onu. Şimdi bunun içinde ununu ekliyoruz. फिर इसमें हम जो है ना ये बेकिंग पाउडर Şimdi bunun içinde hamur kabartma tozu ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. फिर याद करवा दूँ मैं 10 ग्राम हमने ये इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। Şimdi bunun içinde iyice karıştıracağız. Yağ eklemeden önce karıştıracağız. Çünkü eğer yağ eklersen içine o çok karıştırmaz. Hamur kabartma tozu ve onu karıştırmıyor. अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे अपना। Şimdi bunun içinde yağ ekliyoruz. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। Bunu iyice karıştıracağız. ये इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको एक साइड पे अब हम रख देंगे। अब हम अंडों का मटेरियल बनाएंगे। Şimdi bunu iyice karıştırdık. Şimdi bunu bir kenara koyacağız ve ikinciye geçeceğiz. ये हमने इसमें 3 अंडे डाल दिए हैं अपने। Biz bunun içinde bizim yumurtaları kırılarak içine ekledik. अब हम इसमें चीनी डालेंगे। Şimdi bunun içinde şekeri ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. अब इसमें ये जो हमने वनीला वाली चीनी ली थी वो डाल देंगे। Şimdi bunun içinde şekerli vanilya ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. अब हम इसको बीट कर लेंगे। Şimdi bunu biz blender makineden geçireceğiz. Karıştıracağız bundan makineden. इसको 10 मिनट हम फुल स्पीड पे बीट करेंगे अच्छी तरह से। Bunu 10 dakika yüksekte bunu iyice karıştıracağız. अब ये देखें, ये हमारा अंडे जो हैं वो अच्छी तरह मैंने फेंट लिए हैं और चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। Şimdi ben buraya yumurtaları iyice karıştırdım ve şeker de içine iyice karıştı. अब हम इसमें जो हमने ये मिक्सचर मैदे का और ऑयल का बनाया था वो इसमें डाल देंगे। Şimdi bunun içinde bizim yaptığımız ikinci hamurunu ekleyeceğiz. Karışımını ekliyoruz. ये मेरे पास थोड़ा है मटेरियल, 3 अंडों का मैं बना रही हूँ इसलिए मैंने सारा एक साथ डाल दिया। अगर आप ज़्यादा मटेरियल बना रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके तो उसको साथ साथ जो है ना वो हिलाते जाएं। Ve şimdi biz buraya uç yumurtalı yapıyoruz da ondan birlikte hepsini ekledik. Eğer sizin daha hassas yavaş yavaş ekleyin ve onu karıştırın. Şimdi bunu karıştırıyoruz. और इसको जो है ना बहुत हल्की स्पीड पे, बिल्कुल जैसे आप हाथ से मिक्स करते हैं बहुत हल्की स्पीड पे रख के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। Şimdi bunun birinciyle bunu yani çok yavaş bunu karıştırın. Eliyle karıştırın ya o eliyle karıştırın. तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। ख़ास तौर पे जो कुकिंग सीख रहे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही इजी बनने वाला केक है। Ve
Bunu karıştırıncaya kadar siz de gidin bizim kanalına abone olun. Yanındaki zili de basın ki bizim yeni videolar size ulaşır. Ve ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşın ve onlarla paylaşın, öğrenenlerle. Bu yapmaya öğrenenlerle bunu paylaşın. Onun için çok kolay ve çok leziz tariftir bu. जी तो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी। अगर आप इस तरह भी बना सकते हैं, बिल्कुल यही इंग्रेडिएंट्स जो है ना करके और इसी शक्ल में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत सॉफ्ट बने केक तो उसके लिए ये मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मैं इसमें ये दूध डालूँगी। Ve şimdi siz böyle de yapabilirsiniz, yani bunun bu malzemelerle bu şekilde yapabilirsiniz. Ama eğer istiyorsanız ki sizin çok yumuşak olur, o zaman bunun içinde biraz süt ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. मैं ये थोड़ा सा डाल रही हूँ पहले इसको। Biraz ekleyeceğiz önce, sonra bakacağız ki yeterli mi? Eğer yeterliyse tamam, yeterli değilse başka da ekleyeceğiz. Ama eğer bu yeterli olmazsa biz bir küçücük bizim tuz eklemek için tabak oluyor ya, o çay kahve içmek için o kadar küçük tabakta süt ekledik. थोड़ा सा और डाल रही हूँ। biraz daha ये तकरीबन मैंने इसमें जो है ना 2 बड़े टेबल स्पून जो है ना इसमें दूध के डाल दिए। अब आप इसको मिक्स करें और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है ना वो मेरी डिज़ायर के मुताबिक बन गया। Ve buraya biz 2 masa kaşık gibi süt ekledik. Şimdi siz bunu karıştırın ve bakın ki ne kadar iyi oldu bizim karışımımız. ये देखें, इस शक्ल का आपका होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। Bu şekilde olma gerekiyor. Bakın şöyle, katı da değil, sıvı da değil, bu kadar karışım olmanı gerekiyor. ये मैंने एक पैन ले लिया है, तकरीबन 9 इंच का ये मेरे पास पैन है। अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो तो आप इससे बड़ा भी पैन ले सकते हैं। Şimdi buraya biz 24 santimetrelik uzunlukta bir tepsi aldık. अब इसको ग्रीस कर लेंगे। इसमें बटर पेपर मैंने लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। Şimdi bunun içinde biz bir kağıt ekledik, üzerine koyduk. Şimdi bunu bunun 4 bir yana saçıyoruz. अच्छी तरह से इसको ग्रीस करना है आपने। Hepsinde yağını saçıracağız iyice. हमने इसको ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें मटेरियल डाल देंगे अपना। Şimdi bunun yağını ekledik, bunun üzerinde saçırdık. Şimdi bizim karışımını ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. इस केक को आप सादा भी खाना चाहें, सादा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बेशक इसके ऊपर क्रीम लगा लें, जैसे क्रीम वाले केक का स्पंज बनता है वो भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। Ve siz eğer isterseniz bunu sade yiyebilirsiniz ve eğer isterseniz bunun üzerine kremalı yiyebilirsiniz. Krema oluyor ya, krema saçırıyoruz, kremalı pasta diyoruz ya, öyle de yiyebilirsiniz ve sade pasta da yiyebilirsiniz. Çok lezzetli olur. हाँ, अब हमने इसमें ये डाल दिया है। अब हम इसको ओवन में रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए, और 20 से 25 मिनट में आपका केक तैयार हो जाएगा। Şimdi biz bunu karışımını ekledik. Şimdi bunu biz mikrodalgadan geçireceğiz. 20'den 25 dakika mikrodalgadan geçirdikten sonra sizin pastanız hazır olacak. इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें कोई भी किशमिश, मेवे, मुरब्बे डाल सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा मैदा हल्का सा लगा के, ताकि वो अंदर ना डिप हो जाए, और इसके ऊपर डाल दें। Şimdi bu sırada siz bunun üzerine ne isterseniz sizin kuru meyveler ekleyebilirsiniz buraya. Ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz, bademler, ama üzerine biraz unla bunu kaplayarak içine ekleyin ki bu içine girmeyi, üzerine ekleyin. इसको अब ओवन में रखने जा रहे हैं।
जी तो ये हमारे 30 मिनट हमने इसको ओवन में रखा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। Bakın biz bunu 30 dakika mikrodalgalardan geçirdik. Şimdi bunu deneyelim. Bir bıçak ya da herhangi bir şeyle bunu içine giderek. मैं इसको टूथपिक से चेक कर रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर डालेंगे। ये टूथपिक आपकी बिल्कुल साफ निकली है। Bakın bizim dişlerin sticky bir temiz çekti. Onun için bu oldu şimdi demek. और देखिए बहुत ही प्यारी शक्ल आई है इसकी। बहुत ही प्यारा केक बना। Bakın ne kadar güzel şekli geldi ve ne kadar da güzel bizim pastamız oldu. Ve arkadaşlar şimdi sizinle bugünkü videomuzu bitirdik. Sizinle çok eğlendik ve çok leziz pasta yapmak öğrendik. Yani sade pasta, kremalı pastayı yapmadık ama inşallah gelecek onun tarifinde de. तो दोस्तों आज की वीडियो को भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ हम लोगों ने ऐड कर दिया है। हम लोगों ने आपके साथ बहुत फन किया और बहुत टेस्टी स्पंज बनाना सीखा, केक का स्पंज। उसको जैसे कि मैंने बताया आप खाली भी खा सकते हैं, पहले भी बताया, और आप क्रीम के साथ भी खा सकते हैं। हम इंशाल्लाह डेकोरेशन की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। Nadvallerinde hatırlayın. Allah bize güvende tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. अभी मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हम लोग पे बरकत रहमत बनाए रखे। हम लोग का हम नासिर हो। गुले गुले, बाय बाय।